तो गाइस हमारा आज का टॉपिक है प्लेसेंटा प्रेविया। तो प्लेसेंटा प्रेविया जो इंटरकॉन्टिनेंटल का टाइप है। तो व्हाट इज प्लेसेंटा प्रेविया? इट इज अ कंडीशन ऑफ द प्लेसेंटा implant the lower uterus segment partially or completely covering the intracervical os. So here the placenta that will normally implant in the endometrium, but here it will implant in the lower uterus segment partially or completely, either covering the internal os. According to FIGO classification, there are mostly four types of uh, placenta previa. In type 1 minor, type 2 major, type 3 major, type in type 1 minor, known as a low laying placenta. Placenta is within 2 centimeter but not covering the OS. It is within the 2 centimeter, reach the uterine segment but not cover the OS. In type 2 major placenta, partial placenta previa, partially cover the internal OS. Type 3 major, it will complete placenta previa, completely cover the internal OS. Type 4 is the central placenta previa. Center of the placenta lies over the OS. So type 1 is the minor lower link placenta. It is only within the placenta but not covering the internal OS. Type 2 measure to partially covering the internal OS. Type 3 measure to completely covering the internal OS. Type 4 is the centrally placenta, in which center of the placenta lies over the internal OS. Third is the molar classification: lower link placenta, partial previa, and complete previa. So these are three types, but type 4 भी हो सकता है according to FIGO classification. Now, etiology or risk factor. What are the etiology of the placenta previa? Multiparity. Multiparity means maternal. What are the maternal risk factor and obstetrical risk factor? Maternal risk factor can be multiparity, means there are more number of pregnancies are there. There was a maternal more than 35 years, smoking, uterine surgery, for example, DNC and myomectomy. Obstetric surgery, the previous placenta previa or previous C-section or assisted ART assisted reproductive technology or multiple gestations, for example, twin pregnancies. Now, what are the clinical feature of the placenta previa? Painless, bright red vaginal bleeding in the third trimester. In the third trimester, we see mostly painless but bright red vaginal bleeding. No uterine tenderness, no fetal distress, unless bleeding is massive. Malpresentation, either transverse or breech or oblique like presentation. Uterus is soft and non-tender. Then high presenting part floating may occur. Recurrent antepartum hemorrhage. So recurrent antepartum hemorrhage होगा. So what are feature? Painless, bright red, vaginal bleeding in third trimester, no uterine tenderness, no kind of the any fetal distress. Malpresentation may present. Uterus is mostly soft and it is not tender. High presenting part and may occur of the recurrent antepartum hemorrhage. What are the important differentiation? How will differentiate the placenta previa from abrasive placenta? This is the most common question that we will ask. Placenta previa मैंने पहले भी कहा it is painless, but abrasive placenta is painful. It is bright red, abrasive is dark red. Uterus is soft, in abrasive uterus is very tender and rigid. Here fetal status is usually normal, but abrasive is mostly compressed. Coagulopathy is rare, coagulopathy common. So 5 feature पेन यहाँ पर painless होगा, यहाँ पर painful होगा, bleeding यहाँ पर bright red होगा, यहाँ पर deep red होगा. Uterus is soft here, non-tender here, tender होगा. Fetal status is normal. One complex coagulopathy is rare, coagulopathy is common. Now, diagnosis हम कैसे करते हैं? प्लास्टिक पेपर को मोस्ट कॉमनली यूज करते गोल्ड स्टैंडर्ड दैट इज अल्ट्रासाउंड. अल्ट्रासाउंड यूज करेंगे ट्रांस वैजाइनल सोनोग्राफी, नोन एज टीबीएस. टीबीएस जुपिटर या फिर टीबीएस बाइक से याद रख सकते हो. ट्रांस वैजाइनल सोनोग्राफी सेफ एंड द मोस्ट एक्यूरेट. ट्रांस एब्डोमिनल USG is less precise. Placenta distance from the voice is measured. MRI, if morbidity MRI का साथ फर्स्ट वन ग्लूकोज हो गया आपका अल्ट्रासाउंड, आपका ट्रांसवाजिनल और आपका ट्रांस एब्डोमिनल हो सकता है. MRI if morbidity adherent placenta is suspected. फॉर डायग्नोसिंग MRI हम यूज करेंगे अगर डायग्नोसिस करना placenta accreta, pancreata और increta. और vaginal examination is contraindicated unless it is और vaginal examination नहीं करेंगे, अल्ट्रासाउंड करेंगे, जब MRI करेंगे. MRI के लिए एक्रीटा पेंक्रिटा placenta pancreata हम जान सकते हैं. ड्यू टू रिस्क ऑफ द मैसिव हेमरेज. कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है प्लास्टिक प्रेविया को? सीवियर हेमरेज हो सकता है क्योंकि बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो रहा है, राइट रेड कलर हो रहा है. तो हेमरेज मेटा कॉम्प्लिकेशन, फिटर कॉम्प्लिकेशन. मेटा कॉम्प्लिकेशन हेमरेज हो सकता है, एनीमिया, अदर देयर विल बी इन्फेक्शन, एंडोमेट्राइटिस, morbidity, increased risk of the C-section, postpartum hemorrhage. तो सीवियर हेमरेज, postpartum hemorrhage, एनीमिया, इन्फेक्शन, मोर्बिडिटी हो सकता है. फिटल कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है? प्री टर्म बाथ हो सकता है, लो बाथ में माल प्रेजेंटेशन एंड फिटल हाइपोक्सिया और डेथ हो सकता है. But how can we measure? Depend upon the types of break. Either it is minor or the major, at the gestational age, according to the severity of bleeding, severity of bleeding, fetal condition. Expected management. How can we manage this condition? By conservative management. See, indication we see, we have to first control the bleeding. Indication should be less than 37 weeks. Not the um, premature. Not the less than 37 weeks. No fetal and maternal compromise. Steps हम क्या करेंगे? First we will admit the patient until they bed rest, monitor visit of fetal well-being. We see the NST USG status of the individual, admit better blood grouping,
corticosteroid, mostly betamethasone is given for the fetal lung maturity. If fetal lung maturity is 35 weeks, we give betamethasone corticosteroid. Prepare for the sudden bleeding, excess blood accessibility. Active management is called as the conservative or expectant management. Indication क्या होगा? Bleeding control less than 37 weeks, no beta beta compromise, admit करेंगे, bed rest, monitor visit, corticosteroid betamethasone देंगे, prepare sudden bleeding. अगर हमें एक्टिव मैनेजमेंट करना है, इंडिकेशन क्या होना चाहिए? gestation से मोर देन 37 वीक होना चाहिए. हमें कंजर्वेटिव मैनेजमेंट तो बताते हैं. एक्टिव मैनेजमेंट में gestation more than 37 week, either fetal compromise अगर होगा, अगर gestation more than 37 week है, if there is repeated bleeding हो रहा है या फिर hemodynamic instability हो रहा है, instability, fetal compromise जो हम करेंगे. मोड ऑफ डिलीवरी मेजर प्लेसेंटा प्रेविया सी सेक्शन मैंडेटरी है. अगर प्लेसेंटा प्रेविया है तो मोड ऑफ सी सेक्शन ही आपको करना है. अगर माइनर लो लेइंग प्लेसेंटा है, ट्रायल ऑफ द लेबर में बी कंसीडर इफ प्लेसेंटा इज ग्रेटर. ओके.